Yeah, hi guys, I'm Dr. Rajat, and with me I have Dr. Ming. He's from Arunachal, Pradesh, and he's done his BDS from KD Dental College, Mathura. So he joined me for 4 days of oral surgery training program, and just want to ask from you, yes, doc, today is the last day. How was your course experience, and what are your takes from the course that you've done? It was great. I had a lot of exposure to patient. I got to learn many things like raising clefts and bone cutting, and techniques to use elevator and all those. Okay, so what made you to join this particular course? Why oral surgery? First of all, I saw many videos of yours in YouTube and Insta Reels and all those. That's why I came to you. Your interest is in surgery, or you like restorative too? Yeah. My interest is in surgery. Clinical practice. So in 4 days, I hope we gave you the push so that you can apply the same thing in your clinic. Whatever cases that we have done here, the techniques, the methods, and the armamentarium that we have. Yeah. So, and what are your future goals? Open your own clinic? My own clinic, yeah. Okay. And wishing you all the best. So would you like to suggest this course to the fellow clinicians who are watching this video? What are your takeaways from the course? बहुत सारा कुछ सीखने को मिला यहाँ। सीखने को मिला। चाहे वो इम्पैक्शन में क्या फ़र्क लगा जब आपने अपने कॉलेज में देखा या पढ़ा, और जहाँ जब किया आपने, व्हाट वाज द डिफरेंस? कॉलेज में जब किया था उसमें फिलर प्रेस करने को नहीं मिला था, उसमें बोन कटिंग वगैरह नहीं मिला था उसमें। तो यहाँ पे आके सर्जिकल जो पेरियोस्टल एलिवेटर है कैसे यूज़ करना है, बोन कटिंग कैसे करना है, कितना करना है, एंड आपको मिनिमली इन्वेजिव कैसे एक्सट्रैक्शन करना है, वो सब। तो आई होप जो भी आपने यहाँ पे किया, अप्लाई किया, आप वही अपने क्लिनिक पे करेंगे और जल्दी क्लिनिक खोलेंगे और बहुत सारे लोगों की हेल्प करेंगे। ठीक है, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।